Hello friends, so we are talking how to write answers. This is a series for answer writing, not just answer writing. आंसर राइटिंग एक बहुत ही शैलो वर्ड हो जाएगा. हाउ टू अंडरस्टैंड दैट जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप लिखते कैसे. बचपन से आप स्कूल में लिखते आए हैं, कॉलेज में लिखते आए हैं और यहाँ तक कि इसके लेटेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो वी ऑल्सो रन कस्टमाइज प्रोग्राम्स, वी ऑल्सो रन कस्टमाइज कोर्सेज एंड वी ऑल्सो मेक ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड राइट कि कैसे लिखा जाए. वी बिलीव फर्मली दैट कोई भी कुछ भी लिख सकता है. आफ्टर ऑल आपको लेखक और साहित्यकार और जर्नलिस्ट नहीं बनना है. बट देन हाउ टू पुट योर आइडियाज ऑब्जेक्टिवली, ये एग्जाम की जरूर डिमांड है विदाउट हाई वोकैबुलरी. दैट इज वाई प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन so as to get the latest ideas. आंसर राइटिंग इज अ वेरी सटल एंड ए वेरी वेरी मीनिंगफुल प्रोसेस. ये आपकी पर्सनैलिटी से इंट्रिकेटली लिंक्ड है. मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आई कांट use jargons to make it obviously very shallow and simple. So let's take up the question in the series. Here are economics question. So question number 1 saying, you can also note down the question, write short note on the following. Short note बोला है, comment नहीं बोला ना, ये बोला कि discuss करो. Write short note on the following. So first is World Bank, second is the new international economic order, Karl Marx, and question number 2 is what is rolling plan. आज की डेट में डायरेक्टली भले या ना पूछा जाए, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर भी इन सारे एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते रहेंगे. दैट इज व्हाई वी आर going through this unique exercise and we are facilitating our candidates and our students to work on this so that success must be sure under all circumstances. So World Bank, commonly known as IBRD, that is International Bank for Rural Development, लेकिन इसका साल आ सकता था, इसका साल नहीं आया. Very sad. A group of 5 institutions, IBRD, IDA, IFC, IMGA, ICISD, इनके साथ में फुल फॉर्म ऐसे एक रेडियंट करके बन सकते थे, वो भी नहीं हुआ. वर्क्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, वो तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या डेवलप कंट्रीज में ऐसा करता है, एलडीसी में ऐसा करता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा करता है, क्या सिर्फ मेंबर्स के लिए ऐसा करता है, ये भी यहाँ क्लियर नहीं है. Formation Bretton Woods Conference 1944. Saal must be very sure. You must be very sure of the year. Then obviously you can write it. To agree on new rules with the financial order post World War II. अगर इसकी जगह हम ऐसा लिखते कि there must be facilitation of poverty reduction and also creation of a equal uh, order, equal sustainable political and economic order in the world. That is what World Bank is facilitating. साथ में आप ये भी लिखते कि इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर, आपने लिख दिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये भी लिख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इरिगेशन, डैम्स, हाईवेज. लेकिन काश हम अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल देते तो इसकी जगह हमें सारा का सारा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने का मौका मिलता. असेसमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स फंडेड, इसकी जगह हम लिखते स्टेट सेंटर रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करता है. इसकी जगह हम लिखते कि फिजिकल फेडरलिज्म जो हम टर्म यूज करते हैं उसके अंदर स्टेट्स का रूल आता है. इसकी जगह हम लिखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान है, या फिर देयर आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडेड प्रोग्राम जो इंडिया में चल रहे हैं, वेदर दे आर फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर दे आर फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर दे आर फॉर हाईवेज. कहीं पे अगर कोई रोल है तो प्लीज आप लेके आते. कोई यूनिक स्टेट का एग्जाम्पल, Kerala state, Tamil Nadu का public primary health model, or even the school model, and so on. This would have been a wonderful answer. But then this is also appreciated. But this is what is written in coaching answers. This is what is written in magazines. This is what is written in content making. So हमारा level उठ रहा है, लेकिन ये best नहीं है. I leave it up to your assessment. You can assess and critically assess also. I would be happy and appreciate to have any critical feedback. New international economic order proposed to end economic colonialism, wonderful line, and dominance of developed countries, inequality in economic system when compared with developing countries. अरे भाई HDI क्यों नहीं लेके आए, अरे भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात क्यों नहीं की, आगे शायद की होगी, चलिए देखते हैं. प्लस एम्ड टू गोल्स, सोवर्निटी, इक्विटी, कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट. बहुत अच्छा, लेकिन क्या इसको वही रेडियंट फॉर्म में अगर हम ऐसे करके लिखते, अगर हम उसके बाद उसको भी हम लिखते कि इंडिया ने क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट ट्रेड, फाइनेंस, इंस्ट्रूमेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. वंडरफुल, बट कौन से हैं वो नए इंस्टीट्यूशन, नाम कहाँ है. एड्रेसिंग मिजरी एंड डिस्पैरिटीज ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अरे भाई कौन सी हो, तो न्यूली तो पहले होली. ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन विल रिमेन सेम, आंसर मस्ट चेंज. कैंडिडेट्स ऑलवेज चेंज बट दे फाइट फॉर द सेम थिंग. क्राइम भी रहेगा, प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, पॉवर्टी भी रहेंगी, बस मतलब बदल जाएंगे. ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन थर्स्ट फॉर ब्रेकिंग लॉज और फॉर मेंटेनिंग लॉज कभी नहीं बदलेगा. बट वंडरफुल एफर्ट, बेटर देन द लास्ट टाइम. अगर मुझे मार्क्स अलॉट करने हो आउट ऑफ 5, सो आई वुड से द फर्स्ट क्वेश्चन शुड गेट अराउंड 1.75 मार्क्स एंड सेकंड क्वेश्चन शुड गेट अराउंड 2 मार्क्स.
Karl Marx, a German philosopher, economist, historian, sociology, journalist, and the list goes on. लिस्ट goes on लिखने की क्या जरूरत थी, इतना फ्रस्ट्रेट होने की हमें क्या जरूरत है कि हम ओवर स्मार्ट हो जाएं. हम कोई न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिख रहे हैं. क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास, सेल्फ कोलैप्स. अरे भाबा, बुर्जुआ वर्ड कहाँ है, प्रोलिटेरिएट वर्ड कहाँ है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वर्ड कहाँ है, उसके बिना नंबर नहीं आने वाले. आप बाद में लेके आए हो, ये पहले लेके आना था बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट, तो काम हो जाता. कलेक्टिव ओनरशिप रिसोर्सेज, क्लासेस, सोसाइटी. वंडरफुल पॉइंट्स, and again a very good effort to breach the wall of shallow learning which is reflected. 5 year plans in the media post independence. Fifth 5 year plan suspended in 1977 when the जनता गवर्नमेंट के, क्या उससे पहले कोई रूलिंग प्लान नहीं आया था? प्लीज अगर रात कीजिए, 67 69 के बीच में ऐसा था या नहीं था. लॉन्च इट्स ओन प्लान 1978-83 which is called रूलिंग प्लान. वंडरफुल असेसमेंट ऑफ प्लान्स एवरी ईयर एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान फॉर 10-20 ईयर्स. उसके बाद उनका इम्पैक्ट डालो. आप यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात भी लेके आ सकते हो, आप यहाँ पे सोशल आइडियोलॉजी की बात भी लेके आ सकते हो, एक आध लाइन. अदरवाइज इट इज इमर्जिंग इन ए वंडरफुल मैनर. That's what I can say. It reflects confidence, it reflects clarity, it reflects thought process, and that is how all the ideas I have said. We will try to give you the link of the PDF in the description box also, so that you can take up the question and write your own answer. Obviously, you can get it checked, self-assessed हो सकता है. Otherwise, you can always ask us to join our programs according to your own feasibility, so that we can provide a transparent and a meaningful process which probably you can understand and work upon. So please do subscribe and like our channel, and also get back to us in order to get success. So please, Mansi, what questions do you have? Please put up right now. So I don't have any questions. I'm just learning from my own experience and obviously what are your inputs for my answers. So how do you feel these answers, that what could have more been done provided that you have been learning and you have been reading so much? So firstly, as you said that I could have drawn more diagrams. Then secondly, order of the writing can be enhanced. More specific examples in terms of, writing the broader terms. I could have written more examples, specific examples that Wonderful. can So more. what is one word you will take away from here? One word. One word would be, so need to be more alert when I'm writing. Wonderful. And I really appreciate you for your critical thinking and understanding, and I'm sure this is going to bring success. To all of you also, thank you very much, and wishing you all the best for success, not just in exam, but in life also, because the journey goes on, not just before exam or after exam, but within exam also, and throughout the life. Thank you very much.